my dear colleagues at bar, students of law, ladies and gentlemen. Case law on physical remand. Well, this is a topic for my today's video. Landmark case law on physical remand, which is given to police for the purpose of investigation under section 167, the Code of Criminal Procedure. It is 1984, Pakistan Criminal Law Journal, page 2588, Lahore High Court, His Lordship, Mr. Justice Muhammad Munir Khan, a very competent lawyer and then elevated as judge of Lahore High Court, then judge of the Supreme Court of Pakistan. This is the landmark judgment, and I have myself seen the violation of this provision of law by the respectable magistrates, जो कि पुलिस को एक मैकेनिकल अंदाज में फिजिकल रिमांड दे देते हैं। वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11B is also a relevant provision of law, subordinate legislation, but today I will be focusing only on this case law 1984, Pakistan Criminal Law Journal, page 2588, जिसमें ऑनरेबल जज जस्टिस मोहम्मद मुनीर खान साहब ने बड़ा एलेबोरेट करके इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं टू द मैजिस्ट्रेट्स कि उन्होंने वाइल गिविंग फिजिकल रिमांड, फिजिकल कस्टडी टू पुलिस, तो क्या क्या प्रिकॉशंस अख्तियार करने हैं। और एक डिक्टा, अब मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, डिक्टा मींस जस्ट बाय द वे रिमार्क्स ऑफ अ जज, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द केस इन हैंड। जुडिशियल डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा और डिक्टम, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो जस्टिस मोहम्मद मुनीर खान साहब ने वाइल डिसाइडिंग दिस बेल एप्लीकेशन, which was basically bail in murder case 302, तो फिजिकल रिमांड के मुतल्लिक डिक्टा पास किया था, इंस्ट्रक्शंस दी थी टू द ऑल द मैजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जजेस के और इन पुलिस ऑफिसर्स एज वेल, कि किस तरह से आज के बाद उन्होंने ये रिमांड को केसेस को डील करना है। फिजिकल रिमांड, यू मस्ट बी नोइंग, इफ द इन्वेस्टिगेशन is not completed within 24 hours, then the magistrate, whether he has or has not jurisdiction to try the case under section 167 the Code of Criminal Procedure, वो time to time but maximum for a period of 14 days वो पुलिस को कस्टडी देने का jurisdiction रखते हैं मैजिस्ट्रेट साहब। इसमें बेशुमार कोर्ट्स ने होल्ड किया हुआ है, सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कि 14 दिन का इकट्ठा रिमांड नहीं देना। इवन द वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट इज वेरी मच क्लियर कि टाइम टू टाइम। और फिर मैजिस्ट्रेट ने यह भी देखना है कि अगर उसने 2 दिन का रिमांड दिया है तो केस डाइज से और अदरवाइज कि इस 2 दिन में पुलिस ने क्या प्रोग्रेस की है इन्वेस्टिगेशन में। ये जो रिमांड दिया जाता है, फिजिकल रिमांड, just to enable the investigating officer to complete the investigation, उससे पूछगिछ कर सके। इसमें आप डियर कोलीग्स ने भी विटनेस किया होगा, मैं खुद फौजदारी वकील हूँ, कि पुलिस इसमें 3rd डिग्री मेथड्स यूज़ करती है, हथकंडे यूज़ करती है, मारती है, पीटती है, सोने नहीं देती, विच इज़ अनलॉफुल, इलीगल, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। एनीवे, इसमें जो डिक्टा पास हुआ वो है, मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए पॉइंट वाइज वो आपके सामने आई वुड लाइक टू रीड इट आउट। ड्यूरिंग फर्स्ट 15 days, the magistrate may authorize the detention of the accused in judicial custody liberally, but shall not authorize the detention in the custody of the police except on strong and exceptional grounds, and that too for the shortest possible period. The magistrate shall record reasons for grant of remand. So first of all, magistrate जिसने रिमांड देना है वो उसकी वजूहात अपने ऑर्डर में लिखने के पाबंद हैं।
Next, the magistrate shall forward a copy of his order passed under section 167 CRPC to the session judges concerned. मीनिंग देयरबाय मैजिस्ट्रेट ने रिमांड देने के बाद उसकी एक कॉपी अपने मुतलका सेशन जज साहब को भिजवानी है. नंबर 4, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 days the magistrate shall require the police to submit complete or incomplete challan, and in case the challan is not submitted, he shall refuse further detention of the accused and shall release him on bail with or without surety. Next, after the expiry of 15 days, no remand shall be granted unless the application is moved by the police for the grant of remand adjournment. एक्चुअली इस केस लॉ में उन्होंने जो जुडिशियल रिमांड है 344 उसको भी साथ साथ रखा हुआ है. यानी 167 के तहत तो फिजिकल रिमांड होता है और फिजिकल रिमांड के बाद जब जेल में भिजवा दिया जाता है अक्यूज्ड को, मुल्ज़म को, तो फिर उसका जुडिशियल रिमांड हम टेक्निकली उसको कहते हैं, तो उसको भी डील किया गया है. वो मैं अभी बाद में आपसे शेयर करता हूं और अपनी इनपुट देता हूं. नेक्स्ट पॉइंट जो डिक्टा में इस जजमेंट में, लैंडमार्क जजमेंट में आया है जी, the application moved by the prosecution police after the expiry of 15 days of the arrest of the accused be treated as an application for adjournment under section 344 the Code of Criminal Procedure. Before granting remand, the magistrate shall assure that evidence sufficient to raise suspicion that accused has committed the offence has been collected by the police and that further evidence will be obtained after the remand is granted. So अभी तक भी यही है कि मैकेनिकल अंदाज में एक मशीनी तौर पे पुलिस की एप्लीकेशन पे आपने रिमांड नहीं दे सकते, एंड इट विल बी इलीगल, अनलॉफुल, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन. लोगों की लिबर्टीज के साथ किसी मैजिस्ट्रेट साहब को खेलने की इजाजत कानून नहीं देता. द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ग्रांट रिमांड एडजर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड. यानी मुल्ज़म का जब भी पुलिस लेने आएगी रिमांड, तो वो मुल्ज़म को साथ पेश करेगी. और आमतौर पे आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि वो या तो पुलिस की गाड़ी में ही बैठा रहता है और जाके थानेदार साहब वो एक एप्लीकेशन दे के तो रिमांड ले आते हैं. खास तौर पे मुफस्सल कोर्ट्स में ये होता है. लाहौर में शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि, लेकिन छोटी कोर्ट्स में वो यही करते हैं, विच इज अगेन इलीगल, अनलॉफुल. अक्यूज्ड का इन पर्सन पेश करवाना, दैट इज मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी. नंबर 8 जी, द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ग्रांट, इस पॉइंट को मैं इस तरह से लेना चाहूंगा, द मैजिस्ट्रेट शुड अवॉइड गिविंग रिमांड एडजर्नमेंट एज हिज रेजिडेंस. नो, दिस इज द फूड फॉर थॉट फॉर अस द लॉयर. अगेन मुफस्सल कोर्ट्स में शाम के वक्त कोर्ट टाइम खत्म होने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब की रेजिडेंस पे शाम को एसएचओ साहब या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो जाके रिमांड ले आते हैं, जो कि नापसंदीदा फेल डिक्लेयर हुआ है, इलीगल, अनलॉफुल बाय द हायर कोर्ट्स, स्पेशली इन दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑन फिजिकल रिमांड. द मैजिस्ट्रेट शैल गिव अपॉर्चुनिटी टू अक्यूज्ड टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी टू द ग्रांट ऑफ एडजर्नमेंट एंड रिमांड. यानी मुल्ज़म से पूछना है, उसको मौका देना है कि उसको कोई एतराज तो नहीं है, यानी उसको मारा पीटा तो नहीं हुआ, और अगर वो अपने कोई ऐसा मेंशन करता है तो मैजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर के अंदर उसकी जो स्टेटमेंट है, मैजिस्ट्रेट साहब वो लिखने के पाबंद है. द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन which may be raised by an accused person and shall give reasons for the rejection of the same. यानी मुल्ज़म ने कह दिया कि मुझे मारा पीटा गया है, मुझे रात सोने नहीं दिया गया, मुझे खाना नहीं दिया गया, वो सारे एतराज़ात अपने इंटरम ऑर्डर, अपने उस ऑर्डर में, रिमांड ऑर्डर में लिखने हैं, और उसके बाद उनको रद्द करने की वजूहात भी लिखनी है, और उसके बाद वो रिमांड देना है, जो कि आमतौर पे आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है. मैजिस्ट्रेट साहब इन इंस्ट्रक्शंस को, जो कि बाइंडिंग है ऑन ऑल द मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द पंजाब एटलीस्ट, कि वो इसको फॉलो करें, लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब इससे आंखें बंद करके बैठ के मैकेनिकल अंदाज में रिमांड दिए जा रहे हैं. द मैजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन पुलिस फाइल बिफोर डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिमांड.
यानी जो जिम्नियां हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने पहले ऑलरेडी 2 या 3 दिन का रिमांड लिया है, उन जिम्नियों को पढ़ना है बड़े केयरफुल तरीके से कि 2 दिन या 3 दिन जो मैंने रिमांड दिया था उसके अंदर पेशे रफ्त क्या हुई है, तफ्तीश क्या हुई है, रिकवरी क्या हुई है, फर्दर एविडेंस क्या कलेक्ट हुई है, और अगर कोई नहीं हुई तो ही शुड रिफ्यूज टू गिव रिमांड टू द पुलिस अंडर सेक्शन 167. 13. If no investigation was conducted after having obtained remand, the magistrate shall refuse to grant further remand adjournment. यानी रिमांड उसने लिया, उसके बाद उसने सिर्फ उसको बंद ही रखा है सलाखों के अंदर थाने में, और कोई पेश रफ्त वो नहीं कर सका. In that case, the magistrate shall refuse to give remand to the police officer. Number 14. The magistrate shall not allow remand adjournment after 2 months, which is a reasonable time of the arrest of the accused unless it is unavoidable. ये अब जुडिशियल रिमांड की हो रही है कि हर 14 दिन बाद 2 साल तक रिमांड नहीं देते चले जाना चाहिए, और ये मैक्सिमम उन्होंने कहा है जी कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट चालान के लिए 2 months विच इज अ रीजनेबल टाइम, वो उसके बाद जुडिशियल रिमांड जो है वो भी मैजिस्ट्रेट को रिफ्यूज कर देना चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए पुलिस को टू सबमिट कंप्लीट और इनकम्प्लीट चालान. अदरवाइज ऑलरेडी इट हैज बीन हेल्ड कि मैजिस्ट्रेट shall release him on bail with or without surety, which hardly happens in the courts of law. हालांकि this judgment is in front of every magistrate. In case, point number 15, complete challan is not submitted, the magistrate shall commence trial on the strength of incomplete challan and examine the witnesses given in the list of witnesses. Complete challan नहीं है, नामुकम्मल चालान मंगवाए और गवाहान के इस्तखासा के गवाहान के बयानात वो कलमबंद करना शुरू कर दे, ट्रायल कमेंस करेगा. वो अननेसेसरी डिले जो है साल हर साल की, जो कि अदालतों में आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूं, इट हैज बीन कंडेम्ड थ्रू दिस जजमेंट. 16. If the challan is not submitted within 2 months, the magistrate shall report the matter to the session judge of the district and also bring the default of the police to the notice of superintendent of police of the district. नई चालान पेश हुआ 2 महीने तक, इट इज ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि अपने सेशन जज साहब के नोटिस में भी लाए और एसपी कंसर्न को भी लिखे कि इस पर्टिकुलर केस में आपके मतहत सबान वो ये कर रहे हैं, कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं. नेक्स्ट, द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ग्रांट रिमांड मैकेनिकली फॉर द सेक ऑफ कोऑपरेशन विद द प्रोसिक्यूशन पुलिस. नेक्स्ट, the magistrate shall always give reason for the grant of remand and adjournment. यानी रिमांड फिजिकल और जुडिशियल रिमांड जो एडजर्नमेंट है वो रीजंस के साथ रिमांड देने का पाबंद है. अब बिफोर डिपार्टिंग, इसमें जो लास्ट कंक्लूडिंग पैरा है मैं वो आपके नॉलेज में, आपके नोटिस में पढ़ के लाना चाहता हूं, और मेरी रिक्वेस्ट होगी मैजिस्ट्रेट साहबान से भी कि प्लीज इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो दिस जजमेंट. द मैजिस्ट्रेट्स शुड रियलाइज दैट दे आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द हाई कोर्ट फॉर द इलीगैलिटीज एंड इर्रेगुलरिटीज डन बाय देम, एंड दैट द हाई कोर्ट under section 439 the code of criminal procedure is quite competent to examine the correctness of the orders passed by them, and in case they violate the instructions given by high court, serious action may be taken against them. और इसके बाद उन्होंने सारी वो रीजनिंग करके मर्डर केस में जो भी उन्होंने बेल ग्रांट की. Then at the end another paragraph I would like to read it for you, and I will advise you, all my junior colleagues, I will suggest, I will advise कि जब भी आप फिजिकल रिमांड को कंटेस्ट करने जाएं तो कॉपी ऑफ दिस जजमेंट 1984 ये आप अपने साथ लेके जाएं या ये बुक साथ लेके जाएं और एक कॉपी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने रख दें और उन्हें कहें कि जनाब आपकी मर्जी है, आप जरूर रिमांड दीजिए, लेकिन अपने
ऑर्डर में लिख दीजिएगा कि मैंने अपने आर्गुमेंट्स में इस केस लॉ का हवाला आपको दे दिया था। उसके बाद आप जितना मर्जी रिमांड जिस मर्जी अंदाज में चाहें आप मजाज हैं दे सकते हैं, और उसके बाद देखिएगा कि किस तरह से ये जजमेंट फेवर करती है आपको, और आप अपने क्लाइंट के लिए उसके राइट्स के लिए किस तरह से कामयाब होते हैं। दिस पैरा इज ऑल्सो वेरी वेरी पर्टिनेंट। द मजिस्ट्रेट शैल ऑलवेज गिव रीजन फॉर द ग्रांट ऑफ रिमांड एंड एडजर्नमेंट्स। द मजिस्ट्रेट शुड रियलाइज, ये वही है, थोड़ी सी रेपिटेशन है लेकिन मैं इसको कहना चाहूंगा, that they are answerable and accountable to the High Court for the illegalities and irregularities done by them, and that the High Court under section 439 CRPC is quite competent to examine the correctness of orders passed by them, and in case they violate the instructions given by this court, serious action may be taken against them. Let a copy of this order be sent to district magistrates, Superintendent of Police and session judges of all the districts in Punjab. They would ensure that the instructions given by in the matter of remand adjournment are fully complied with the magistrate. The session judges concerned would bring non-compliance of these instructions by the magistrates to the notice of registrar, additional registrar of Lahore High Court benches. So this is a landmark judgment जो कि I have shared with you so that it should be helpful for you people while contesting the physical remand or judicial remand. And with this I say goodbye.